Good morning, class. Welcome back to your next online learning. Today we will be covering one chapter from our Bal Bhartis. If you have your Bal Bhartis with you, you can take them out. If you don't have it, I have sent a PDF on the WhatsApp group. You can check it out. I have also put the text in this video, so don't worry about it if you don't have either of them, okay? You can write this text down in your notebook. Perfect? Shall we begin? I hope all of you are ready with your learning caps and with your notebooks and pens and full concentration. The chapter we are covering today is Odd One In. Okay? Can all of us read the objective together with me? 3, 2, 1. We will be able to understand the character's opinion and form our own opinions. Okay? Now let's move and see what does this objective mean. What is the meaning of the two things that we are looking at? Character and opinion. Characters are the people in the story. All the people or even animals who play important part come under characters. I have taught you characters even earlier, okay? Characters मतलब जो लोग कहानी में होते हैं, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो, जिन लोगों से मिलके कहानी बनी है वो characters हैं, okay? Now what is an opinion? Opinion is what a character thinks about someone or something. सोच of a person. Okay. So basically कोई इंसान किसी के बारे में क्या सोचता है उसे हम ओपिनियन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई होल्ड द ओपिनियन दैट इवन एनिमल्स डिजर्व रिस्पेक्ट. मैं ये सोचती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि जानवर भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. ओके, ओपिनियन मतलब कौन क्या सोचता है, किसी की सोच क्या है. इज इट क्लियर? तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे? पहले हम कैरेक्टर्स ढूंढेंगे और फिर हम उनकी सोच देखेंगे और फिर हम अपनी खुद की सोच फॉर्म करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज भौमी दीदी के बारे में कहानी पढ़ रहे हैं. ओके, तो आपने देखा कैरेक्टर का नाम भौमी दीदी है. देन यू विल सी व्हाट इज भौमी दीदीज ओपिनियन, दैट इवन एनिमल्स डिजर्व रिस्पेक्ट. नाउ यू विल थिंक कि क्या भौमी दीदी का ओपिनियन सही है या गलत है, और फिर आप अपना ओपिनियन बनाएंगे कि हाँ, मुझे भी लगता है कि एनिमल्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता एनिमल्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. ओके, so this is what we are doing today. We are finding the opinion of the characters and then we are forming our own opinion. Okay, now steps to follow. ये करने के लिए हमें कुछ steps follow करने पड़ेंगे आंसर करने को और ये ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने को. लेट्स सी. स्टेप नंबर 1 इज रीड द टेक्स्ट. जो भी आपको टेक्स्ट मिला होगा वो आप अच्छे से पढ़ेंगे पहले. एनोटेट द टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एनोटेशन करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एनोटेशन. ओके. स्टेप 3 इज फाइंड द कैरेक्टर. आप वो कहानी पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. फाइंड कैरेक्टर्स ओपिनियन. उसके बाद आप उस कैरेक्टर का ओपिनियन, उस कैरेक्टर का सोच लिखेंगे. थिंक इफ इट्स करेक्ट और नॉट. देन यू विल सिट एंड थिंक कि क्या जो कैरेक्टर सोच रहा है वो सही है या गलत है. Form your own opinion. Then you will form your own opinion. What do you think? Okay, आपके हिसाब से क्या सही है. Now, these are the steps that we will follow. Please keep these steps in mind. Okay, you can also write these steps, write objective and write down these steps in your notebook. Okay, now you have to use these starters to write your opinions. हम अपना opinion ऐसे ही नहीं बोलते, हमें कुछ स्टार्टर्स ये होते हैं, मतलब ये वर्ड से हम अपना ओपिनियन स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज आई थिंक. सो ओके, माई ओपिनियन इज exercise is good for health. Okay, so I will say I think exercise is good for health, or in my view exercise is good for health, or I believe exercise is good for health, or according to me exercise is good for health. So basically you will use one of these four things to share your opinion. इन चार में से एक चीज यूज करेंगे to share your opinion. Okay, I hope you are clear. Now I will give you one example to see how we'll be answering. Okay, I will read the text for you. All the kids were playing outside. Rekha fell down and hurt herself and started crying.
Gopu started laughing at her and making fun of her, whereas Rita helped Rekha and took her to the hospital. Okay, are you understanding the story? Kids were playing. One kid fell down, and one kid started making fun of the person who fell down, while the other kid came out and helped the person. Now pause the video and understand what the text means. Okay, let's come back. Now first thing you will do is, what we are doing is, we are finding the characters. There are three characters in the story: Rekha, Rita, Gopu. Okay. Now second step is, we are writing the character's opinion. सबसे पहले let's write Gopu's opinion. Gopu क्या सोचता है? He thinks such kids are weak and funny and he laughs at them. गोपू सोचता है कि जो बच्चे ऐसे गिर जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं और फनी होते हैं और हमें उनकी मजाक उड़ानी चाहिए, एंड ही laughs at them. वो उन पे हंसता है. रीता's opinion. रीता क्या सोचती है? She thinks such kids need help and helps her. उसे लगता है जिन बच्चों को चोट पहुंचती है उनको मदद की ज़रूरत है और वो उनकी मदद करती है. Now your question is, are their opinions correct or not? अब आपको खुद से सवाल करना है कि आपको क्या लगता है, उनकी जो सोच है वो सही है या गलत है. Okay, so what I think, what Bhaumi Didi thinks is, I think Rita's opinion is correct, whereas Gopu's opinion is not correct. Okay, ये मेरे हिसाब से. आपका ओपिनियन अलग हो सकता है आपको गोपू का ओपिनियन सही लगे, रीता का सही ना लगे. दिस इज कंप्लीटली योर ओन ओपिनियन. ओके, now step 5 is my opinion. Now I am forming my own opinion after looking at characters, their opinion, and looking at whether they are correct or not. Bhaumi Didi is forming her own opinion. In my opinion, such kids should be given help and we should not laugh at them, as they will feel terrible if we make their fun. Okay, now what I think is, the kids who fall down, they really need our help and we should not laugh at them because they are already hurt, and if we laugh at them, they will feel terrible. उनको बहुत बुरा लगेगा. Okay, so this is how we will be moving ahead with this chapter. This is the flow that we are going to follow. Is it correct? Like, did you understand it? If not, bacha, you can go back to the video and do it again, because after this you have to start answering the questions yourself. Okay, let's move ahead. Now this is where our chapter starts. This is the start of the chapter. Okay, अगर आप अपना नोटबुक आपने खोली है तो आपको दिखेगा this is how the chapter starts. First I will read it for you, then you will pause the video and read it aloud. मतलब आप जोर से पढ़ेंगे खुद. Okay. How was the first day of school? Asked mother as Reema sat down for dinner. Okay, Reema shrugged. No lessons, just settling in. Any new girls in your class? Enquired her father, Mr. Sain. Only one, Malti, and she's funny, grimaced Reema as she helped herself to the salad. Why do you say that? Asked Mr. Sain. She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Reema, naming one at the other end of the country. Pause the video, read it aloud yourself. Okay, now once you have read this, you have to annotate it. Okay, I've already taught you what annotation is. Please annotate the text. I will just give you summary. Okay, Reema is one girl whose new class has begun, and this was her first day of the school. When she came back, parents are asking, Bacha, how was the day? So Reema is saying it was fine. There is one new girl who is really funny. The parents are saying, why do you think she's funny? She's saying because she can't speak much English. She's from another state. कि वो funny है क्योंकि उसे English नहीं आता, वो कहीं दूसरे state से आई है. Okay? Once you have understood it, let's move ahead with the questions. Okay. First question is, name all the characters. You have to write the names of all the characters. Second is, what is Reema's opinion about Malti? On what basis she formed her opinion? Opinion मतलब सोच. What does Reema think about Malti? On what basis she formed her opinion means basis मतलब किस बात को लेके उसने अपना opinion form किया. If she thinks Malti is funny, वो ऐसा क्यों सोचती है? On what basis? Next is, do you think it's correct? Now you have to think
whether you agree with रीमा or not. क्या आपको लगता है रीमा का ओपिनियन सही है? What is your opinion about kids like मालती? अभी आपको अपना ओपिनियन बताना है कि आपको क्या लगता है मालती जैसे किड्स के बारे में. And you have to start your answer with writing in my opinion, in my view, according to me, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस स्टार्टर्स दिए थे. Okay? Now pause the video and write these answers. Okay, now this is next paragraph from the text. Okay, I will read it for you. Oh, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sain quietly. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Reema. Her parents exchanged glances. Reema was their only child. They doted on her. But she could be insufferable at times. I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sain as he rose from the table. Now, pause the video, write down this text and annotate everything. Okay, once you are done annotating, let me give you a little summary. So now the father says, Mr. Sain, रीमा's father, okay, रीमा के पापा बोलते हैं कि उस स्टेट के बच्चे स्पेशल होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, वो मैथ्स में खासकर बहुत अच्छे होते हैं. ओके, देन रीमा सेज कि नहीं नहीं, दिस गर्ल इज नॉट स्मार्ट, उसके ऑयली से बाल हैं, बिंदी लगाती हैं. शी सेज गुड मॉर्निंग टीचर, और वो हंसती है ऐसा बोल के. ओके, पेरेंट्स लुक एट ईच अदर, मतलब दे थिंक कि रीमा इज बिकमिंग सो सेल्फिश एंड शी इज नॉट टॉकिंग नाइस अबाउट अदर पीपल. तो पेरेंट्स थोड़ा सा सैड हो गए. सो व्हेन किड्स डोंट बिहेव वेल, पेरेंट्स उदास हो जाते हैं ना, वैसे ही रीमा के पेरेंट्स भी थोड़ा सा उदास हो गए. देन while going away, रीमा के पापा बोलते हैं, I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti. Means I am hoping कि तुम और तुम्हारे दोस्त मालती के लिए चीजें मुश्किल नहीं करोगे. Okay. Now, pause the video, read it again, understand properly. Okay. First question is, what is Mr. Sain's opinion about how to treat different kids in your class? What is Mr. Sain's opinion? अभी हमको Mr. Sain एक कैरेक्टर थे, उनका ओपिनियन लिखना है. जो डिफरेंट किड होते हैं क्लास में, जो हमसे अलग होते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए. What do you think Mr. Sain thinks? Do you think it's correct? Do you agree with it? What's your opinion about forming prejudice about the new people we meet? Now, prejudice, I already told you the meaning on WhatsApp. I will read it again for you. Prejudice means forming opinion about someone or something beforehand or without meeting the person. मतलब किसी के बारे में अपना ओपिनियन पहले से बना लेना, बिना किसी इंसान से मिले या उनसे बात करे, पहले से उनके बारे में कुछ सोच लेना. Like Reema formed opinion about Malti that she is not good even without talking to her. जैसे रीमा ने बोल दिया ना कि मालती तो स्मार्ट भी नहीं है, ऐसी है, उसको बिना मिले और बात करे. This is forming prejudice. Okay. Now, the third question is, what is your opinion about forming prejudice about the new people we meet? आपको क्या लगता है कि क्या हमें पहले से अपने दिमाग में प्रेजुडिस, पहले से अपने दिमाग में एक सोच बना लेनी चाहिए किसी से मिलने से पहले, या हमें पहले उस इंसान से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, फिर उस इंसान के बारे में कुछ बोलना चाहिए. ओके, these are the questions that you will be doing. Pause the video, do these questions. Okay. Now, last task is, this is your writing task. You have to write diary entry as Reema about her day 1 in school. Imagine you are Reema और आपको एक डायरी एंट्री करनी है रीमा बन के कि आप रीमा हैं और आपका पहला दिन कैसा रहा स्कूल में. ओके, डियर डायरी, देन यू विल राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट एज रीमा. लव रीमा. ओके, आई ऑलरेडी टॉट यू डायरी एंट्री. फॉलो द फॉर्मेट, राइट एज रीमा. याद रखिएगा, अपना बन के नहीं लिखना है, रीमा बन के आपको लिखना है, उसका डे 1 कैसा था स्कूल में. ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप. If you have any doubts, you can watch the video again or ask me doubts. And if you have done this work, type on the comment section, done. Happy learning, everybody. See you in the next class.